Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Arjit Chakravarti ji. Welcome to the live virtual classes organized by the Board of Studies, Institute of Chartered Accountants of India, ICAI. Welcome to the live virtual sections organized by the Board of Studies, Academic, Institute of Chartered Accountants of India. Myself, Dr. N.V. Ravi. I welcome. Today's section is sampling. CA Arjit Chakravarti. Welcome you, sir, for today's section on sampling topic, which is a very important topic for the chartered accountant as well as the student of the chartered accountancy course also be. With this background, actually, I welcome you, sir, and the course is very important. Here we can expect from the chapter uh, this unit actually 3 to 4 questions from this chapter also be. And I welcome you, sir, once again, and thank you so much for Thank you, sir. Thank you, sir. Very good afternoon, and thanks to Dr. N.V. Ravi, sir, for initiating the discussion on this particular topic on sampling. So this is the next chapter we are taking up in the live virtual classes organized by Board of Studies Academic. First, we are taking some of the students' queries which have come today. So first I'm solving some of the questions. First question is on coding. Now, the question is, if monkey is coded as NOJFX, then how will puzzle be coded in the same system, in the same language? So this question probably has come from one of our students, Reshma, who's part of the session today. So the question, if you see, monkey is coded as NOJFX. So please see that the first letter of the word monkey, M, is becoming N. So in the code, M is becoming N. That means it is a +1 coding for the first letter. The second letter, दूसरा जो letter है, O is becoming N. That means it is a -1 coding. So first letter is +1, second letter is -1. Again, if you see the third letter is the third letter of the word monkey is N. N is becoming O in the code. Please see the third letter in the code that is becoming O. That means again it is a +1 coding. So if you look at the sequence for monkey and the code NNOJFX, actually the code is first letter +1, second letter -1, third letter again +1, fourth letter again -1. So this sequence will continue +1, -1, +1, -1. So it is like, you can call it like a cycle which is going on. So the word puzzle, if you see, what will be the code for the word puzzle? Now, if you look at the word puzzle, first letter is P. So if you want to find out the code, first letter, we have to go for the +1 coding. So P will become Q. Next, we have the second letter is U. According to our cycle, the code which we have been able to understand, we have +1, -1. So second letter, we will go one step back because it is -1. So U will become T. Again, the third letter is Z. Third letter means we will go for +1 coding. So Z becomes the next letter, that is A. Fourth letter is also Z. The fourth letter of the word puzzle is also Z. Fourth letter, according to our code, is -1. So we will go one step back, and therefore we are getting Y. One step before Z, one letter before Z, it is Y. The fifth letter is L. So we go for +1 coding. So IJKLM. So the next letter is M. So therefore we are getting M in the code. And the last letter of the word puzzle is E. This is the sixth letter. And sixth letter means we will go one step back because it will be -1 coding. So E becomes D. So if you look at the word puzzle, now the equivalent code according to the question, which is, of course, this is the main question.
of problem number 73. So the word puzzle, when it is coded, it becomes QTAYMD. So in the question which was sent by one of our student, the option number B, the second option, yes, I think Subhash Oja, he has also given the right answer, QTAYMD. Very good. We move to the next question which Reshma has sent. This is on direction test. Now, the question says that a man is driving 10 kilometers towards the north. Then he takes right turn, drives for 3 kilometers. Then again he takes a right turn, drives for 6 kilometers. The question is, find the distance and the direction with respect to the starting point. So if you draw the diagram carefully, 10 kilometers north, so going up, then the person is taking a right turn. So once you go up, that is north, and if you take a right turn, you are moving towards the eastern side. So you can see right turn means now the person is driving towards the east for 3 kilometers. Then the person again takes a right turn. So from the eastern direction, if you take a right turn, you're now moving towards the south. You are going down. And the person is driving for 6 kilometers. That means the trajectory which he has covered is 10 kilometers north, 3 kilometers east, and then 6 kilometers south. So this is where he is currently. Therefore, if you just draw this diagram, you will get a triangle where you find, that means the original position and the final position of this man. If you join these 2 points, you will get the hypotenuse of a right angle triangle. And the right angle triangle has 2 sides. One will be 3 kilometers in length, and the other will be 4 kilometers, 10 minus 6, 4 kilometers. So we have to find the length of the diagonal or the hypotenuse of this particular right angle triangle. Now, we will apply Pythagoras theorem, which says that the hypotenuse squared is equal to the base square plus the perpendicular square. Here, the base would be 3 kilometers and the perpendicular comes to 4 kilometers. So if you do the calculation, we are getting linear distance is 5 kilometers. And the direction of the man where he is currently stopping with respect to his original position, if you find, it will be in the northeast direction. So the distance is 5 kilometers and the direction is northeast, upper side towards the right. So it is northeast direction. So this was the second question which Reshma had sent. And yes, Garvit has also given the right answer, 5 kilometers. The third and the last question we have is sent by Reshma. This is on seating arrangement. Now the question says the number of conditions are given. There are 5 persons, A, B, C, D, and E, who are sitting on a bench. Okay, now the question says that the conditions. Conditions number 1, E is sitting to the extreme left. Okay, then we have A is sitting on the right-hand side of E and B. The third condition, C is sitting right from the right side, from the right end. He is second. C is sitting on the second position from the extreme right-hand side. The fourth condition says that A and C are sitting together. Also, A, B, and C, D are also sitting together. So there are altogether, if you see, 5 separate conditions which are given in this problem. We have to find out, the question says, where exactly is B sitting? So if you look at the conditions, it is very clear that E is sitting to the extreme left. Now we have A who's sitting to the right side of E and B. That means we are getting the first three persons, E, B, A. Next we have, we are also satisfying the condition number 5,
which says that A and B are sitting together, plus we are satisfying the condition number 2, which says that A is sitting on the right-hand side of E and B. Then if you see, after we put EBA, next we will put C. Why we are putting C is because of condition number 3, which says that C is second from the extreme right. So we are putting EBAC. Since C and D are sitting together, therefore, the last position, the 5th position from the left-hand side has to be occupied by D. Therefore, the order we are getting, the sitting order we are getting is E, B, A, C, D. And this indicates that the question, if you see, is where is B sitting? So the answer to this is that B is sitting, if you look at the sequence, B is sitting between E and A. Now, in the given question, which the student has sent, option C is the right answer, which says that B is sitting between E and A. I think some of you have given the right answer. Yes, D is on the extreme right. Yes, Subhash has given the right observation. Next, one query came regarding the bell-shaped curve. Now, in the last session on statistics, which we covered the description of data. So it was the first chapter of statistics. So there we have covered line diagram and, of course, frequency polygon histogram. And there was a discussion on freehand curve. Now, freehand curve is actually a limiting form of both histogram and frequency polygon, and this is of 4 types. So you have the most common, which is the bell-shaped curve, which is like a bell going up and down. It's like a wave. Okay, just a samundar ka leher hote, it's like a wave. And then, of course, we have the U-shaped curve, and then the J-shaped curve, and then we have mixed pattern. Bell-shaped curve is very similar to what you will study later in normal distribution. So in bell-shaped curve, with the passage of time, the frequency initially increases, okay? It increases, reaches a maximum, and then with the passage of time, the frequency comes down. So it increases first, reaching a maximum height, and then it comes down. So you can see it is actually in the nature of a curve which is going up and down. It is like a bell-shaped curve, right? So bell-shaped curve. So it is usually symmetric. Of course, we also have asymmetric bell-shaped curves, but later on you will be studying theoretical distribution, which is one of the more advanced chapters of statistics, and there you will cover normal distribution. So please refer again to normal curve when the particular chapter will be taken up for discussion. So these were some of the interesting questions which I was able to take up and discuss. These questions came in just a few minutes back. Now we move to our main topic today, which is on the sampling. And here we will look into a very important question, that is, what is sample? We are going to cover the importance of sampling. What are the 4 major principles of sample survey? And then we will cover another very important point, that is sampling error or standard error, as we call it. Then, of course, we are going to discuss the difference between population and sample, sampling variability, and then the last point would be, of course, the sample mean and standard error calculation, followed by illustrations. The last point of this chapter is, and as Ravi sir already said, that you can expect 3 to 4 questions, and very basic questions are coming in the exam. So you will get questions on the type of sampling distributions, sampling techniques, and we will cover different basic types of sampling, probability sampling, non-probability sampling, and here some new terms we will understand. For example, statistical, so SRS, right? So simple random sampling. Then we will go through stratified sampling, multi-stage sampling, and then non-probability sampling, which is also known as
purposive sampling or judgmental sampling. As usual, we will cover majority questions from the chapter end MCQ from the study material. And thereafter, we are covering MTP questions, RTP questions, and 4 sets I've prepared, four sets of questions which came in the previous exams. So we will cover almost 14 to 15 exam questions which came in the previous year's exam. So that's how we will proceed. So sample, you can see, is, as we all say, that sample is linked with the population. So say we have a class of 40 students. We want to know what is the overall of these students in accountancy paper. So rather than taking feedback from all 40 students, we can create a random sample. Maybe we choose any 4 or 5 people, and we try to know that what is their score in accountancy. So out of our total population, here the total population is 40. The total number of students in the class is 40. We are selecting a sample of 5 students. So a sample is collected. Why? It is collected from the population. Why? To get an inference or conclusion about the population. So this is the first point. So sample is a part of the population. You have already covered set theory. So I can very well say that sample is a subset of the population. It is a part, it is a component, it is a segment of the population. And usually in statistics, when we do statistical analysis, the intention is to analyze the sample, and from the sample, we will try to draw conclusions or inference regarding the entire population. Even, let me also tell you, you are all studying the CA course, and in your intermediate, you will study our auditing paper. In auditing, you will also find that there is an auditing standard on sampling. So the statistical chapter which we have in QA on sampling is 100% practical in audit, because till now, auditing is done in majority cases through sample, simply because we cannot cover entire observations, entire population, due to different restrictions, time, cost, and so on. So we always try to draw a sample from a given population, and this is how we try to analyze the sample, with the intention that the sample results will be more or less accurate to the population results. So this is the entire objective. Now we move to, now in sample, there's one question from Reshma. Is it numerical question? Yes, Reshma. This is my message to all our students who are part of this session today. Please note that questions could come on the theory part. Yes, also 1 or 2 practical questions can come. Why I'm saying? Because we have 2 simple formula regarding the standard error, which is actually, we will see sigma divided by root n. So questions could come on numericals as well, but majority of the questions, possible questions from this chapter, will be theoretical question, because this chapter essentially deals with the technical procedure of creating sample, and to understand the connectivity between. We move to the first part, chapter 13, and this is 13.2.5. So population is also known as the universe. For example, if you are staying in an apartment, say there are, just to give an example, say there are 50 apartments in your society, in your housing society, 50 apartments, 50 owners are there, 50 owners, okay? 50 flats are occupied. Now here the total population is 50. Number of flats, 50, number of owners, 50. If I want to create a sample of 10 flats, that means I'm drawing 10 people randomly from this list of 50. So here this 10, the set of 10 flats is the sample, and the set of 50 flats is the universe or the population. So this is the basic fundamental, you can say, concept of sample and
population. Now we look at, therefore, what is sample? A sample may be defined as a part of the population, and it is selected. Why? As we saw, why a sample is selected? So that by studying the sample, we can get the right idea about the entire population. So you know that when you watch any YouTube video, okay, so the video is 25 minutes, half an hour, 1 hour. Now, people may not have the patience to go through the entire 1 hour video or the entire half an hour video. So the YouTubers, what they do, they create a 2-minute summary of the entire content of the video. And they show it in the beginning. You must have seen. So by going through the 2 minutes short executive summary of the video, you are able to understand कि ये 1 घंटे का जो वीडियो है उसमें क्या क्या कवर किया जाएगा, क्या क्या दिखाया जाएगा, किस विषय पे चर्चा होगी. सो आपको एक पूरा जो आइडिया, आपको एक स्वच्छ आइडिया मिल जाता है by watching the 2-minute clip. You know, it is sometimes called like, shorts or clips. So this is also sample, क्योंकि वो आधा घंटा या 1 घंटे का जो पूरा वीडियो है उसी का कुछ गिने चुने, प्लीज नोट द वर्ड्स, गिने चुने सिलेक्टेड स्लाइड्स, सिलेक्टेड फुटेज इकट्ठा करके एक समराइज्ड शॉर्ट्स तैयार होता है. So I can say the shorts is an example of a sample, whereas the full video, the full YouTube video is nothing but the population. So this is basically what you see, sample versus population. Please note, dear students, that population is also known as universe. Next, we go to the next point, that is, we are defining sample. Okay. What is sample? Sample is a smaller part or a collection of units from the population. और उसका मकसद क्या है सैंपल को स्टडी करना? क्योंकि पूरा पॉपुलेशन को एनालाइज करने के लिए टाइम हो सकता है आपके पास नहीं है. पूरी पॉपुलेशन को अगर हम लोगों को, इफ वी हैव टू एनालाइज, इट विल टेक टाइम, एफर्ट्स एंड कॉस्ट. 3 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस. एक है समय, एक है आपका जो बजट यानी फाइनेंशियल इशू. द थर्ड इज एफर्ट. So to cut down on all these 3, to save the time, to save money, to save efforts, usually we go for a sample survey. So the intention of doing sampling is to make sure that we are able to form the right conclusion, the right analysis of the entire population. That means by studying the marks or by analyzing the marks of 5 or 6 students of the class, I should be able to understand the entire performance of the class. यानी सैंपल जो 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स हम लोग एनालाइज करेंगे, अगर वो 5 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है, उनका जो मार्क्स मिल रहा है, मान लीजिए अकाउंट्स का, उसका जो एवरेज मार्क्स होगा, the average marks of the sample should be very close to the average marks of the entire class. I hope you are able to understand. This is technically sampling. और इसको याद रखिए dear students that sampling, जैसे मैंने बताया, it is a very important part of auditing as well. You will study sampling. The ICAI has brought out a separate standard on auditing exclusively on sampling. So the statistical tool method, जो हम लोग तकनीक की जो यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, उसी पे आधारित आप लोग देखेंगे बाद में कि सैम्पलिंग का जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, इट इज बेस्ड एंटायरली ऑन द प्रोसीडियर, ऑन द टेक्निक व्हिच वी आर डिस्कसिंग नाउ. So the purpose of sampling is to gather data about the population so that you can take the right conclusion about the entire universe या फिर entire population. So sampling करने का मकसद क्या है? You are able to reduce your cost, you are able to save your time. आप काफी हद तक confidentiality, anonymity आप मेंटेन कर सकते हो. You may not have to disturb the entire population. जैसे मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट, यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, यू वांट टू फाइंड आउट कि भाई रेस्टोरेंट का फीडबैक, जो the customers who are walking and having food and beverage in a restaurant,
जो खाना खा रहे हैं उनका ओवरऑल फीडबैक कैसा है। इसको जानने के लिए मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में सारे इन द थ्रू आउट द डे, मान लीजिए देर आर से 100 पीपल हु आर वॉकिंग इनटू द रेस्टोरेंट। Now you may not have the time to interview all the 100 people. So what you are doing, आप randomly किसी को आप पकड़ते हो, किसी को अप्रोच करते हो, अगेन 2-3 मिनट के बाद आप किसी और को अप्रोच करते हो, जो जो कस्टमर रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, you actually creating a sample and getting their feedback. You are trying to analyze the full feedback of all the 100 customers who are walking into that particular restaurant. So इससे टाइम का बचत है, पैसों का बचत है, एफर्ट्स का बचत है। और आप जैसे देखिए कि जब गाड़ी बनाया जाता है, see this particular point, it is there in the study material also. Through sampling you are able to make sure that, आप सुने होंगे गाड़ी जब बनता है क्रैश टेस्ट, दिस इज अ वर्ड विच यू मस्ट हैव हर्ड, क्रैश टेस्ट, जो हम लोग कहते हैं एनकैप रेटिंग, कि मारुति का एनकैप रेटिंग क्या है, ह्यूंडई का कोई गाड़ी का मॉडल का एनकैप रेटिंग, टाटा का एनकैप रेटिंग बहुत हाई है। सो ये जो एनकैप रेटिंग होता है उसमें गाड़ी को क्रैश करवाया जाता है टू सी वेदर द कार कैन विथस्टैंड अ फ्रंटल क्रैश, अ साइड इंपैक्ट, and whether the children in the car will be safe or not. इसके लिए एक fully configured पूरी बनाया हुआ नए गाड़ी को जबरदस्ती हाई स्पीड में क्रैश करवाया जाता है। इंटेंशन क्या है कि मान लीजिए एक कोई भी कंपनी, मारुति हो या होंडा हो या ह्यूंडई हो या किया मोटर्स हो, मान लीजिए इन्होंने 1000 गाड़ी, एक पर्टिकुलर मॉडल का गाड़ी इन्होंने बनाया। The company wants to know what is the performance of our car in the crash test. Now, if they have manufactured 1000 cars, will they send all the 1000 cars for crash test? If they do it, सारे हजार गाड़ी खत्म. So what they do, they take a sample of 3 or 4 cars and then they will send it for crash test. So sampling के द्वारा we are also able to conserve the population. We don't have to destroy the entire population. Next we have, it also sampling is dependent on correspondence या फिर support from the individual जो कि आपके साथ sample का जो सर्वे होता है उसमें जो हिस्सा लेंगे, उनका जो support cooperation वो भी बहुत important है। Okay, now Reshma is asking, our focus should be on theory or numericals, on both, but of course theory is more in this chapter. Only 1 or 2 numerical formula will be there. Once we go through the questions, you will have complete idea. Abhi on the right hand side of the slide आप देख सकते हो कि we are having the techniques, the steps of creating a sample. सबसे पहले we have to define the target population. उसके बाद कैसे sampling करेंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी, वो हम लोग को दिखाना पड़ेगा। वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू डिसाइड। इसके बाद हाउ टू फाइंड द सैंपलिंग यूनिट्स, नेक्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट व्हाट विल बी द सैंपल साइज। प्लीज रिमेंबर, सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, बिगर द सैंपल साइज, मोर विल बी द एक्यूरेसी ऑफ द सैंपल। यानी सैंपल का जो रिजल्ट्स आपको मिलेगा वो उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा, जिसके द्वारा आपको पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक कंप्लीट एक्यूरेट आइडिया मिल जाएगा। सो बिगर द सैंपल, मोर इज द परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, बेटर इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल और योर कॉन्फिडेंस लिमिट्स। सो आफ्टर यू डिटरमाइन द सैंपल साइज, आपको सैंपलिंग यूनिट सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको फील्ड वर्क स्टार्ट करना है। So this is the process of sampling. Now in this particular unit, the students are learning the basic principles of sample survey. इसमें very important 4 principles are there. I draw your kind attention to these principles now, and we will see that these are frequently coming in the exam as question. So इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि we have these questions coming up based on these 4 principles. 4 principle है। फर्स्ट प्रिंसिपल जिसे कहते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये क्या कहता है? इट सेज दैट इफ अ सैंपल ऑफ
fairly large size is drawn from the population, then on an average, the sample would possess the characteristics of that population. इसका मतलब है, आप देखते हो, सिंपलेस्ट एग्जांपल सोचिए, ब्लड होता है, ब्लड टेस्ट के द्वारा क्या क्या पता चलता है आपका? मान लीजिए प्लेटलेट्स कितना है, आरबीसी कितना है, कोई किसी का कोई मान लीजिए कोई इंफेक्शन तो नहीं हुआ, हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड शुगर। तो ये जो ब्लड टेस्ट होता है, क्या डॉक्टर साहब हमारे शरीर से सारे खून निकाल लेते हैं? यस और नो? डेफिनेटली नो। सो दे आर टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्लड, है ना? सो मेडिकल होता है, यू कैन सी दैट जब भी कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी जब टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट, उसमें एक सैंपल इज टेकन, ठीक है? वो सैंपल चेक करके डॉक्टर साहब को पता लगता है वेदर वी हैव एनी बीमारी, वेदर वी हैव एनी इंफेक्शन। अकॉर्डिंगली he or she will find out what medicine to be applied. Very good. Okay, now one question is anonymity. Reshma is asking, anonymity means जिसका नाम पता नहीं है, जो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करता, एनोनिमस। मान लीजिए आप कहीं पे कंप्लेन कर रहे हैं, you are complaining for say you went to have some food in a restaurant and you didn't like the food, या फिर कोई मूवी आप देखने गए, मूवी अच्छा नहीं लगा, so आप कंप्लेन कर रहे हो. So if you do not disclose your name, say Reshma, if Reshma does not mention her name and just writes customer number 1 या customer number 10, that is anonymous. So anonymity means no disclosure of the person's name or the identity of the person. Okay. Now, so this is basically the law of statistical regularity. यहाँ से question आता है. Second very important law from the study material, we are taking up the 4 principles. Principle of inertia, principle of optimization, or the last one, principle of validity. सो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है कि आपका पॉपुलेशन का नेचर जैसा होगा, आपका सैंपल का भी नेचर वैसा है. ये इस जंक्चर पे मैंने ये ब्लड टेस्ट का एग्जांपल आपके सामने रखा. सो ब्लड सैंपल इज टेकन फ्रॉम आवर बॉडी. सो अगर मेरे में कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, कोई इंफेक्शन है, द सैंपल विच इज टेकन फ्रॉम माई बॉडी will show the same infection. This is the law of statistical regularity, first law. Second law says that the results derived from a sample is likely to be more reliable as the sample size increases. ये बहुत अहम, it is the crux of the sampling chapter. Bigger the sample, more is the accuracy level. That means दो मान लीजिए क्लास है, एक क्लास में 50, दो क्लास 1 क्लास 2, क्लास ए क्लास बी, दो कक्षा, दो क्लास है, स्टूडेंट्स क्लास, दोनों में 50-50 स्टूडेंट्स है. पहला क्लास ए से मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग अ सैंपल ऑफ 15 स्टूडेंट्स. मैं सबका अकाउंट्स का नंबर चेक कर रहा हूं या मैथमेटिक्स क्यूए का नंबर चेक कर रहा हूं. दो क्लास है, दोनों में 50-50 बच्चा है. क्लास ए में 50 स्टूडेंट्स, मैं वहां से 15 स्टूडेंट्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नंबर मैं एनालाइज कर रहा हूं. कक्षा नंबर बी, क्लास बी, वहां पे 50 लोग हैं, वहां पे मैं अपना सैंपल साइज और छोटा कर लिया. मैं केवल मात्र 5, ओनली 5 स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग 5 स्टूडेंट्स टू शो मी देयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मार्क्स. दोनों क्लास ए क्लास बी, population size is same, 50 students in each of the class, but the size of the sample in class A is 1, 5, 15, 15. Class B ka sample size is 5, 5. Which sample will give me more accuracy and better results if I want to know about the full population? It is very natural that class A, जहां पे मैंने 15, I have taken जो 15 मैंने जो स्टूडेंट्स का सैंपल मैंने उठाया, वही क्लास, वो जो सैंपल साइज 15 है,
it will give me more accuracy than the sample जिसमें size is 5. That means bigger the size of the sample, more will be the accuracy. This is called principle of inertia. ये दूसरा जो प्रिंसिपल है. तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है, एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको सही ढंग से सैंपल आपको उठाना पड़ेगा. दैट मीन्स इफ आई वांट टू फॉर्म द ओपिनियन अबाउट, से फॉर एग्जांपल द ओपिनियन अबाउट, मान लीजिए कि समथिंग टू डू विथ से प्रेफरेंस फॉर ट्रैवलिंग. मैं देखना चाहता हूं कि लोगों को कौन सी जगह ट्रैवल करने में ज्यादा दिलचस्पी है, समुद्र के किनारे या पहाड़ियों पे. टू ऑप्शंस आर गिवन. So if I want to form the opinion proper, if I want to get the right opinion, I must interview at least few hundred people. If I talk to only 5 people, I will not get the right opinion, या फिर I will not get the appropriate percentage of the full population. So therefore, larger the sample और optimize करने के लिए सैम्पलिंग डिजाइन पे ध्यान देना पड़ेगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, व्हिच सेज दैट ओनली व्हेन यू आर यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देन ओनली योर सैंपल विल बी राइट, करेक्ट. बिकॉज अगर मेरे को सैंपल ड्रॉ करना है फ्रॉम द पॉपुलेशन, और अगर मैंने मान लीजिए कि इफ आई यूज जजमेंट, if I don't use mathematical or statistical probabilistic sampling, then what will happen? मैं जो सैंपल बनाऊंगा उसमें wrong, biased estimate हो जाएगा. I will not pick up the right sample. अगर मैंने गलत सैंपल चुन लिया, the results will be wrong. It will give me biased output. So this is what is covered in principle of validity. So ये जो स्लाइड है इसमें ये 4 जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 1 statistical regularity, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी. ये 4 जो है इसको दोबारा बाद में पढ़ लीजिए बिफोर योर एग्जाम, रिवाइज करिए, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आता रहता है. नेक्स्ट वी गो टू कंपैरिजन बिटवीन सैंपल सर्वे एंड कंप्लीट एन्यूमरेशन. कंप्लीट एन्यूमरेशन का मतलब क्या है? 100% वेरिफिकेशन. अगर एक शहर में द पॉपुलेशन इज 1 करोड़, 1 करोड़ जनसंख्या है, और से मान लीजिए हम लोग जानना चाहते हैं कि ये 1 करोड़ जो जनसंख्या है, यहां पे कितने परसेंटेज लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, या जो हम लोग कहते हैं गरीबी का रेखा उसके नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल. It may not be possible for you to go and meet all the 1 crore people in that particular city. So what shall we do? We will go for a sample survey. So complete, अगर आप 100% सब लोगों के साथ, if you want to interact, ask questions, take their interview, it is called complete enumeration. जैसे मान लीजिए जब देश की जब जनसंख्या सेंसस होता है, the government goes for complete enumeration. That means they go to each and every house to know what is your name, how many people are there, what is your age, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका KYC, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है वो चेक करते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर कंप्लीट एन्यूमरेशन. सो पॉपुलेशन सेंसस के टाइम पे कंप्लीट एन्यूमरेशन प्रोसेस फॉलो होता है. अदरवाइज सैंपल इफ यू आर यूजिंग, देन इससे 3 चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा. फर्स्ट इज that as compared to a census, which is 100% survey, sample survey is faster. यानी इसमें स्पीड ज्यादा है, समय कम लगेगा, खर्च कम होंगे, because it is cost effective and it is, of course, it should be reliable also. So time, cost, efforts, reliability. 4 things we have to keep in mind. Of course, we also have accuracy and necessity. Now we come to the next point, जो कि है sampling errors. So, जैसे हम देख रहे थे कि sample is a part of the population, that is number 1. Number 2 is we have 4 principles. The principle of statistical regularity,
जो कहता है कि पॉपुलेशन का जो फीचर वो सैंपल का फीचर में भी होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी का ब्लड में कोई खराबी है, कोई से इफ देयर इज सम इंफेक्शन, द पर्सन इज सफरिंग सम वायरस, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अ सैंपल ऑल्सो। सो उसके लिए आदमी पूरा खून नहीं निकालना है, आपको थोड़ा सा खून निकालने से आपको पता लग जाए, डॉक्टर को पता लगेगा। सो सैंपल फीचर, सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज वेरी सिमिलर, इट इज आइडेंटिकल टू द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। इसके बाद वी सॉ ऑप्टिमाइजेशन है, यू हैव वैलिडिटी एंड अदर प्रिंसिपल्स। नाउ दो तरह का सैंपलिंग एरर हो सकता है, बेसिकली दो तरह का एरर वी कैन कॉल इट। दिस कम्स एज अ क्वेश्चन। There can be two errors when we are going for a sample survey. दो तरह का एरर हो सकता है, एक जो हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग एरर, एक जो है हम लोग कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। प्लीज सी द स्टडी मटेरियल। दिस इज ऑन द, वी आर ऑन स्लाइड नंबर 8 and you can see this is taken from the study material of the ICAI. You can see here we are having two types of errors. One जो कि डिफेक्टिव सैम्पलिंग करने से होता है, दूसरा जो है जो कि साइकोलॉजिकल बायस, वैनिटी। ठीक है, मैं मान लीजिए किसी सैंपल, मैं एक मोहल्ले का मैं सैंपलिंग कर रहा हूं, मोहल्ले में 50 लोग हैं। मेरे को पता करना है कि कितने लोग यहाँ पे हिंदी मूवीज देखते हैं। ओके, तो मैं हिंदी मूवीज देखने के लिए सारे 50 लोगों का घर में, आई एम नॉट नॉकिंग देयर डोर, आई एम जस्ट नॉकिंग एट द डोर ऑफ 5 पीपल। यानी यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज 50 है, सैंपल मैं ले रहा हूं 5। Now the question is, say there are 5 people. I have taken a sample of Mr. A, B, C, D, E. पांचों लोगों का सैंपल है, बट मे बी ए बी सी डी ई, ये पांचों में दो लोग ऐसे हैं जो दरवाजा खोलते ही नहीं है। दे आर नॉट आंसरिंग माई रिक्वेस्ट, आई एम कॉलिंग देम, दे आर नॉट टेकिंग द कॉल। एंड सो आई एम नाउ सेइंग कि भाई बी और सी को सब्सटीट्यूट करके वी विल इंट्रोड्यूस टू अदर पर्संस एक्स एंड वाई। लेकिन ये एक्स और वाई को अगर हम लोग सैंपल में लाएंगे, इससे थोड़ा बायस हो सकता है। सो नॉन सैंपलिंग एरर मींस दिस टाइप ऑफ एरर्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू इग्नोरेंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि नॉन मैथमेटिकल एरर हम लोग कह सकते हैं। इट इज अ बिहेवियरल एरर, whereas sampling error means you are actually talking about the statistical error part. यहां पे एक मैंने छोटा सा फोटो पिक्चर लगाया, दैट बायस्ड एस्टिमेशन किस तरह दिखता है। Okay, one question has come. Can we say that bigger the sample, more the cost and time? Yes, bigger the sample. This question has come from Mr. Abhiram. जितना बड़ा सैंपल होगा, वो सैंपल का एनालिसिस करने के लिए cost, time, efforts will be more. Absolutely. That is why sample size is also very important. ज्यादा अगर छोटा सैंपल होगा, आपका खर्च कम होगा, लेकिन सैंपल से आपको अच्छी रिजल्ट्स, यू विल नॉट गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। सो सैंपल साइज वर्सेस पॉपुलेशन साइज, क्या प्रोपोर्शन होनी चाहिए? दिस रिक्वायर्स जजमेंट, दिस रिक्वायर्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यू हैव गॉट द राइट पॉइंट, वेरी गुड। ओके, slide 3, Reshma is asking slide 3.5 and 6. Let me just take slide 3 a second. Let me just see 0.5 and 6 what you are saying. Let's see slide, this is slide number, just a moment, this is slide 3. I don't know, this is slide 3. Okay, but I didn't see any 0.56 there. Okay, anyway, now we come to, we are back and we are taking up population. Now please see, first let us complete the chapter, then most of your queries and doubts will be answered. Don't worry on that. इसमें आप देखिए कि पॉपुलेशन, सो पॉपुलेशन सैंपल, ये फोटो पे जो मैंने डायग्राम इस स्लाइड में है उस पर थोड़ा सा फोकस करें। वी विल लाइकली टू लुक एट द सैंपल। सो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन माने आप इस तरह से सोचिए, आपका क्लास में सारे स्टूडेंट्स, 50 students, 60 students, the total 60 students is the population. If we are creating a sample, a part, मान लीजिए 10 students का एक ग्रुप हम लोग बना रहे हैं,
This 10 students is a sample. Population जो है वो जो 50 students है उनका number is shown by capital N. Very important point. वो जो 10 स्टूडेंट्स है उनका जो एवरेज मार्क्स है, मान लीजिए हम लोग मार्क्स की बात कर रहे हैं कि भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबका नंबर क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, देयर एवरेज स्कोर इज शोन बाय द मीन विच इज एवरेज. ये जो आप यहां पे देख रहे हैं, द सेकंड पॉइंट इन दिस स्लाइड, जस्ट अ मोमेंट, यस, इट इज कॉल्ड म्यू. म्यू, MEW, म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. आप देख सकते हो. सो पॉपुलेशन पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर है. नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन शोन बाय कैपिटल लेटर N. नंबर 2, पॉपुलेशन का मीन क्या है, दैट मींस द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 50 स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड म्यू. स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग बाद में सेंट्रल टेंडेंसी के बाद आप लोग करेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी. सो स्टैंडर्ड डेविएशन शोन बाय सिग्मा. सो ये है पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पूरा क्लास. अगर हम लेंगे, आप देख सकते हो ये जो छोटे छोटे पॉपुलेशन से ये जो छोटे छोटे ब्लैक कलर्ड बॉल, these are the sample. So I can draw a sample of 5 students from a class of 50 students. I can draw a sample of 10 students from a class of 50 students. I can draw a sample of 20 students also from a class of 50. So different sample I can select from the population, and each of the samples will have different number. मैं 5 स्टूडेंट को लेके सैंपल बना सकता हूं, मैं 10 स्टूडेंट को लेके बना सकता हूं, 12 स्टूडेंट को लेके बना सकता हूं, 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स को लेके बना सकता हूं. लेकिन एक चीज याद रखिए, जितना सैंपल का साइज बढ़ेगा उतना एक्यूरेट आंसर या एनालिसिस आप कर पाएंगे. So here, when we are talking about the sample size is small n. पॉपुलेशन का साइज इज कैपिटल N, लेकिन सैंपल का साइज हम लोग दिखाएंगे इन स्टैटिस्टिक्स बाय स्मॉल n. सैंपल मीन इज शोन एज x bar, whereas population mean is shown as mu. And lastly, the sample standard deviation is shown by small s, whereas the population standard deviation is shown by sigma. So these are the differences. बिगेस्ट क्वेश्चन जो है इस डायग्राम स्लाइड नंबर 11 पे हम लोग अभी है. इफ यू सी, द बिगेस्ट क्वेश्चन इन स्टैटिस्टिक्स इज वेदर द सैंपल मीन population. Please see in this slide, sample mean is x bar. By studying the sample, are we able to get the full information of the population? That means सैंपल, ये जो 50 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, मेरे को जानना है उनका एवरेज मैथमेटिक्स का स्कोर कितना है. लेकिन मेरे पास 50 स्टूडेंट्स से बात करके उनसे उनका नंबर लेने के बाद एवरेज निकालने का टाइम नहीं है. तो मैं झट से रैंडमली उस क्लास में, मान लीजिए मैं 5 लोगों का एक सैंपल बना लेता हूं. कैसे बनाऊंगा? मैं ब्लाइंडली जाके क्लास में बोल देता हूं कि देखिए आप लोगों का रोल नंबर 1 से 50 है, तो 5 बंदे अपना हाथ उठाएं. रोल नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 5 लोगों का मैं सिलेक्शन कर लिया. 10th पर्सन, 20th रोल नंबर वाला जो बंदा है, 30th, 40th, 50th, इस तरह से मैंने इक्वल इंटरवल में एक एक बंदे को उठा लिया, मैंने सिलेक्ट कर लिया. ओके, सो आई एम गेटिंग अ सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट्स. अभी ये 5 स्टूडेंट्स जो है, इनका नंबर जो है मैथमेटिक्स का, मैं 5 स्टूडेंट्स का नंबर निकालूंगा, उनका एवरेज करूंगा. द क्वेश्चन इज whether the average score of these 5 students will be equal to the average score of the 50 students. ये दोनों संख्या जो होगा, जितना नजदीक आएगा, the nearer the two numbers will be, the better is the quality of the sample. That means if the sample mean is very close to the population mean, that means the sample is effective. It is effective, it is efficient, and the sample design is proper. This is the main funda of ये जो chapter है, इस chapter का basic funda is this. Okay, so therefore
Very, very important point. Okay. One question from Reshma, I'm taking cooperation of respondents, individual firms, administrative agency. इसका एग्जाम्पल दीजिए. देखिए, प्लीज लिसन रेशमा, आई होप यू आर लिसनिंग. आपका दो क्वेरी है. क्वेरी नंबर वन, सैंपल लेने का what is the main objective? As you can see, अभी तक हम लोग का जो डिस्कशन हुआ है, you can understand that sample is taken to reduce the time, to save the time, to save the cost. Also, मान लीजिए अगर मेरे को पूरे मोहल्ले में, एक हाउसिंग सोसाइटी में मान लीजिए 100 फ्लैट्स आर देयर, मेरे को जानना है कि ये 100 फ्लैट्स में से कितने लोग हैं जिन लोगों के पास स्मार्ट है. कुछ कुछ लोग ज्यादा टाइम केबल चैनल देखते हैं, कुछ लोग स्मार्ट टीवी देखते हैं. मेरे को जानना है कि आउट ऑफ दिस 100 अपार्टमेंट्स in the housing society, how many people are watching or how many people are using smart TV. Now I can go for 100%. Reshma, please listen. I can go for 100% coverage. मैं 100 जो हाउसिंग सोसाइटी में 100 लोग हैं, सारे 100 लोगों का घर में नॉक करके मैं पूछ सकता हूं कि सर, मैडम, मैं एक सर्वे कर रहा हूं, तो आप कृपया बताएंगे कि आप लोग स्मार्ट टीवी यूज करते हो या ज्यादा टाइम आप लोग केबल चैनल देखते हो. I can ask this question, but if I do this, I also need the cooperation of all the 100 people. ये पॉइंट आपने जो चैट बॉक्स में लिखा, प्लीज सी, क्वेश्चन व्हाट यू हैव रिटन इज कोऑपरेशन ऑफ रेस्पोंडेंट्स. रेस्पोंडेंट्स कौन है? जो मेरे को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी वो 100 लोग उस अपार्टमेंट में रहने वाले 100 इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स. अनलेस दे कोऑपरेट, आई विल नॉट गेट फुल डेटा. 100 लोगों को अगर मैं नॉक करूंगा, आई एम सपोज टू गेट 100 रेस्पॉन्सेस. उसमें कोई कहेंगे कि हम लोग स्मार्ट टीवी देखते, कोई कहेंगे हम लोग केबल देखते, कोई कहेंगे हम लोग दोनों देखते. अब कोई कुछ कुछ आदमी वो भी बोल सकते हैं कि हम लोग के पास टाइम नहीं है, हम लोग ना तो स्मार्ट टीवी यूज करते, ना तो हमारे पास केबल चैनल है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग 100 डिफरेंट रेस्पॉन्सेस. बट रेशमा, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज ओनली पॉसिबल जब ये जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्डेंट्स सही ढंग से मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे. नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, ये 100 अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स में अगर मेरे को नॉक करके जानकारी लेना है, आई नीड अ टीम ऑफ पीपल, आई नीड सम एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट. So this is the first point which you wanted to know. So I hope you can see that by using sample, I can reduce my manpower. अभी 100 अपार्टमेंट ओनर्स को मैं नॉक नहीं करूंगा, मैं रैंडमली वो जो फ्लैट अपार्टमेंट है, मान लीजिए उसमें 5 ब्लॉक है, ब्लॉक ए बी सी डी ई. मैं ब्लॉक ए में कोई भी एक फ्लैट सिलेक्ट करूंगा, ब्लॉक बी में जाके दूसरा फ्लैट सिलेक्ट करूंगा, और बाद में देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं, समटाइम्स इट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग. पूरा जो पॉपुलेशन, उसको मैं क्लस्टर में डिवाइड कर रहा हूं, और एक एक क्लस्टर यानी एक एक ब्लॉक से मैं एक एक फ्लैट सिलेक्ट कर रहा हूं. आई कैन डू दैट. इफ आई डू इट, आई एम एबल टू सेव द टाइम, कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, यानी मैन पावर का अगर मैं सेव कर पाऊंगा, मैन पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड पॉइंट यू हैव सेड, partial data is all that is available, fossils and historical records, climate change. देखिए, वर्ल्ड में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, एविडेंस है जो एक सैंपल का रूप में है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सैंपल. जस्ट थिंक, आप लोग जानते होंगे करोड़ साल पहले डायनासोर्स घूमते रहते थे. अब सोचिए, जुरासिक एज. काफी सारे हिस्टोरिकल फॉसिल जमीन के नीचे अभी भी दफना है. लेकिन मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं. पॉइंट नंबर 2, पार्शियल डेटा क्या है. एग्जांपल नंबर 1, डायनासोर या जो प्री हिस्टोरिक एनिमल्स, उनके जो अभी भी जो फॉसिल मिल रहा है, आर वी गेटिंग द ऑल द फॉसिल्स? नो, वी आर गेटिंग ओनली पार्ट ऑफ द फॉसिल्स. बाकी सारे फॉसिल डैमेज हो गए हैं, बाकी सारे फॉसिल मिसिंग है, बाकी सारे फॉसिल कंटामिनेशन हो गए. इट इज completely devastated, or it is not visible to us. So we are getting only a sample, a part, a portion. Second question, second example. सोचिए, आप लोग इतिहास में हो सकता है आप लोग काफी इंटरेस्ट रखते होंगे. Please listen to this example very carefully. It is my own example. I've just
thought of it while speaking to you. सैंपल का अच्छा आइडिया मिल जाएगा. सोचिए, मोहेंजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, या फिर आप इस तरह सोचिए, नालंदा यूनिवर्सिटी. आप लोगों को पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा जो कंप्लीट जो हिस्टोरिकल जो पूरा जो यूनिवर्सिटी का कॉम्प्लेक्स था, उसका केवल मात्र 5%, मे बी 5% हैज बीन एक्सकवेटेड. बाकी 95% हम लोगों के हाथ, हम लोग के आंखों के सामने नहीं है. इट इज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. उसका खुदाई नहीं हुआ है. प्लीज, आई होप यू आर एबल टू फॉलो. जो हम लोग कहते हैं, अब जाएंगे कलीबंगान, लोथल, गुजरात, राजस्थान, कुछ कुछ साइट है जहां पे आपको मोहेंजोदारो यानी द ओल्ड सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका कुछ कुछ, धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट साइट है. अब मोहेंजोदारो का जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, it was spread around few thousand kilometers. Have we got the full archaeological site in front of us? No, we have only got a part of it. बाकी जो हिस्सा है शायद अभी भी जमीन के नीचे है, जिसका एक्सकवेशन ना तो हुआ है ना तो होने का चांसेस है, because it is technically difficult. So this is what I mean by partial data. I hope Reshma, you are now clear about the fact that बहुत सारे डेटा हम लोग के हाथ लगता है जो कि केवल पार्शियल है. बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस हम लोग के आंखों के सामने आता है जो केवल पार्शियल है. इट इज नॉट द होल, इट इज नॉट द फुल. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Usha is asking, sir, can we say population mean is proportional to sample mean? Population mean is proportional to sample mean. You mean to say that if the sample size increases, no, it is definitely population mean and sample mean are related. We will see that population, if the sample mean is equal to population mean, that means you are 100% accurate. That means the sample is 100% effective, efficient. But what you have written, that whether population mean is proportional to sample mean, is not always correct. Sample mean and population mean might have a particular relation. It may not be a direct proportion, it may not be a direct arithmetical progression or GP, but there could be certain relationship. That is true, but it may not be proportionate that way. Okay, very good. Next question is, Reshma is asking, are accuracy and reliability same? Okay, both are related. For example, if you give, in this way I will ask, ki Reshma is appearing for her exam, or Reshma or any other student, say Subhash, who is there today, I think in the session, say they are scoring 95% out of 100 in quantitative aptitude. That means your accuracy is very high. If your accuracy is very high, and say I am a very weak student in quantitative aptitude, and if I come to know that Reshma has got 95, Subhash has got 95 also, and say another student Usha has got say 97. Okay, so I will, and I don't know anything. I don't know, I don't have good knowledge of quantitative aptitude. Now I will rely on these people. So accuracy जितना बढ़ेगा, reliability भी बढ़ेगा. सैंपल जितना एक्यूरेट होगा, आप उस पर ज्यादा डिपेंड करोगे. इवन ऑडिट में हम लोग करते हैं, सैंपल रिजल्ट अगर पॉपुलेशन रिजल्ट के नजदीक आता रहता है, इफ द सैंपल इज एबल टू प्रेडिक्ट द एंटायर पॉपुलेशन with a 70%, 80%, 90% accuracy, higher the accuracy, we rely more on the sample. Right? So इस तरह से बोल सकते हो कि it is not the same, but yes, more the accuracy, you can place more reliability. So this question had come from Reshma. Okay. Now we move ahead, and अभी हम लोग देखेंगे कि sample और population का दो important technical term, तकनीकी term जो exam के लिए बहुत ही important है. Friends, we are on slide number 12. Please see, this is from the study material. Sample mean या sample का जो standard deviation, उसको हम लोग कहते हैं, the technical term we use, please note, is statistic. I repeat, statistic. Statistics
जो आप पढ़ रहे हो उसका लास्ट एस हटा दो, स्टैटिस्टिक बनेगा. स्टैटिस्टिक इज द टर्म विच वी गिव फॉर एनी पैरामीटर जो कि सैंपल से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. पैरामीटर क्या है? पैरामीटर इज अ पर्टिकुलर feature of the entire population. So please note that a statistic is a number that describes a characteristics of the sample. Parameter is a particular number that describes the characteristics of the population. अब इसको कैसे रिमेंबर करना है? प्लीज सी. पॉपुलेशन स्टार्ट होता है विद द लेटर P. पैरामीटर स्टार्ट्स विद द लेटर P. सो हमेशा याद रखिए, पैरामीटर मींस पॉपुलेशन से संबंधित. It is linked with population. Similarly, the word statistic starts with S. The word sample also starts with S. So, statistic is linked with sample. Parameter is linked with population. इस तरह से याद रखिए. P and P, S and S. Now, please see this important chart. Parameter यानी पॉपुलेशन का जो इंपॉर्टेंट नंबर्स. फर्स्ट इज पॉपुलेशन मीन, उसको हम लोग दिखाएंगे म्यू. स्टैटिस्टिक यानी सैंपल का मीन वी आर शोइंग एज एक्स बार. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन शोन एज सिग्मा, whereas standard deviation of the sample is shown as small s. Proportion in the parameter is shown by capital P, whereas proportion in the sample is shown by P bar. And last में आप देख सकते हो sampling error, यानी sampling error of the mean. इसका मतलब क्या है कि sample का जो mean है और population का जो mean है उसमें अंतर कितना है, difference कितना है. The difference can be positive or negative. But जितना difference कम होगा, यानी sample का जो एरर जितना कम होगा उतना इफेक्टिव, उतना एक्यूरेट इज द सैंपल. और जितना एक्यूरेसी बढ़ेगा उतना रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन का आप देख सकते हो सैंपलिंग एरर कॉन्सेप्ट इज एस माइनस सिग्मा. फाइनली प्रोपोर्शन जो है उसका जो सैंपलिंग एरर दैट इज शोन बाय पी बार माइनस पी. एंड सैंपल का टोटल नंबर ऑफ members in the sample is shown by small n, and the total number of members in the population is denoted by capital N. Okay, now we go to the parameter, and now from the study material 13.2.3 you can see the same discussion is being done. We are on slide number 13. Okay, and we can see here that we are discussing the areas here, that is statistic and parameter. So parameter, please see study material definition. A parameter may be defined as a characteristic of the population. यानी पूरी सोसाइटी में, आपका जो हाउसिंग सोसाइटी में 100 people are there जो कि सब लोग नौकरी करते हैं. आपको उन 100 ऑफिस गोअर्स जो है उनका एवरेज सैलरी निकालना है. That means the average salary of those 100 people in the housing society, is it a parameter or a statistic? Answer is it is a parameter. वो 100 जो लोग हैं उस सोसाइटी में, वहां से मान लीजिए मैंने एक सैंपल बनाया, उसमें केवल 15 मेंबर है, यानी 100 लोगों में 15 लोगों का मैंने एक सैंपल बनाया. ये जो 15 लोगों का सैंपल है, इनका जो सैलरी है, 15 बंदे का जो सैलरी है, उसका जो एवरेज निकलेगा, द एवरेज सैलरी ऑफ द सैंपल, इज दिस पैरामीटर और स्टैटिस्टिक? आंसर, दिस इज अ स्टैटिस्टिक. ओके, दैट मींस यू कैन सी स्टैटिस्टिक. ये देखिए नीचे की तरफ जो लिखा है, स्टैटिस्टिक इज यूज्ड टू एस्टिमेट पर्टिकुलर सैंपल का पैरामीटर, सैंपल का जो फीचर. लेकिन पैरामीटर हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीटर इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द एंटायर पॉपुलेशन. बाएं तरफ एक मैंने छोटा सा चार्ट दिया है, यू कैन सी. यस, वेरी गुड, थैंक यू रेशमा. यस यस, एब्सोल्युटली, सैंपल वुड बी टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन. वेरी गुड, करेक्ट रेशमा. यस, सो आप देख सकते हो कि एक्स बार इज द मीन ऑफ द सैंपल. पॉपुलेशन का मीन विल बी शोन एज म्यू.
ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन के लिए सिग्मा के द्वारा दिखाया जाएगा, लेकिन सैंपल के लिए हम लोग छोटा s यूज करेंगे. Similarly, proportion in case of population is capital P and proportion in case of sample is small p, p bar basically. Okay, now we are moving to a small example. Let me show you. अच्छा चलिए, पहले मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं, देन यू विल गेट एन आइडिया. अच्छा चलिए, एक डिटेल केस स्टडी मैंने बनाया सो यू अंडरस्टैंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. मान लीजिए देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 4 पीपल. 4 बंदा है, 4 बंदों को लेके मैं एक पॉपुलेशन बना रहा हूं. इट्स एन यूनिवर्स एंड से दीज 4 पीपल, इनका उम्र, इनका एज इज द वेरिएबल. ओके, लेट अस टेक दिस एग्जांपल. So we are on slide number 16 and let us take this example. You will understand, now you will get the complete understanding. मान लीजिए इनका वैल्यू, गौर से नोट करिए, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी केस स्टडी, ये स्टडी मटेरियल में नहीं है, दिस इज फ्रॉम सम आई हैव डेवलप्ड इट फ्रॉम आउटसाइड. सो प्लीज सी, देयर आर 4 पर्संस, 4 पीपल एंड यू कैन कॉल देम ए बी सी डी. सो ये 4 बंदे जो है, दे आर द पॉपुलेशन. मान लीजिए 4 बंदे, दे आर पार्ट ऑफ अ फैमिली. इनका उम्र इस प्रकार है, 18 years, 20 years, 22 and 24. So there are 4 people, it's a population. अब यहां से what we will do, please see carefully. We are finding out the population mean. Please check. हम लोग population mean, we are calculating the population mean. Okay. Please see the slide. अच्छा, one question is there. What is infinite population and hypothetical? Infinite population you can see like अगर मैं कहूं कि मान लीजिए दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ, मान लीजिए कॉकरोच, चलिए नंबर ऑफ कॉकरोच इन मेट्रो सिटी, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट. इफ आई से कि नंबर ऑफ स्मॉल जो पेड़ पौधा होता है, सैपलिंग इन से इन जयपुर, इनफाइनाइट. दैट इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन विच कैन नॉट बी काउंटेड. ओके, नाउ लेट अस सी, ये जो 4 बंदे हैं एबीसीडी, इनका उम्र है 18, 20, 22, 24. This average which we are finding out, this is their average age. This is an example of parameter. Please note it is shown by mu. That means population mean in this case is 21. Now what we are doing, please see, we will try to find out their standard deviation. Population SD. स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोग बाद में, इसका एक चैप्टर होगा, आप लोग बाद में देंगे. मेनी ऑफ यू ऑलरेडी, आई एम श्योर यू नो हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन. सो इन दिस एग्जांपल यू कैन सी population mean is shown by mu, and it, if you see, it is denoted by mu. It is coming to 21, and the population standard deviation in this case, population में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं. हम लोग किस चीज पे अभी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं ये जो चारों बंदे हैं उनके उम्र के बारे में. देयर एज इज द वेरिएबल एंड वी हैव गॉट द एवरेज, द मीन एज विच इज 21 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 2.236. ये दो जो वेरिएबल आपके सामने है, 21 पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, दीज आर द पैरामीटर. ये पैरामीटर कहेंगे या स्टैटिस्टिक कहेंगे? इसको हम लोग पैरामीटर कहेंगे क्योंकि दोनों ही पॉपुलेशन से संबंधित है. प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल. 4 people, 18, 20, 22, 24. We have got the population mean. We have got the population standard deviation. I am writing also in my notepad. इन लोगों का उम्र है 18, 20, 22, 24. Now we move to the next slide. Please see the very important point. We are now creating sample of 2. ये जो चारों बंदे हैं, यहां से हम लोग 2-2 करके सैंपल निकालेंगे, यानी 2 ऑब्जर्वेशन एबीसीडी में रैंडमली दोनों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे. क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? ऑल ऑफ यू हैव वेरी गुड आइडिया ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यू नो दैट. सो वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला, द सेम कॉन्सेप्ट. सो अगर आप देखेंगे फ्रॉम अ क्लास ऑफ 4 ABCD, if you create samples of size 2, n equal to 2, then how many samples can you create? Please see, यहां पे जो samples आप create कर सकते हो कुछ इस प्रकार है.
And of course, this sample is done with replacement. Okay. So sampling with replacement. That means I am selecting one sample, again I am putting it back, and then again I am going for the next replacement. So selection, either you can select 2 times. 18, जिसका उम्र 18 है यानी ए को बार बार 2 बार सिलेक्ट कर सकते हो. It can be 1820, 1822, 1824. See the row number 1. Now we come to row number 2. It can be 2018, 2020, 2022, 2024. Please see row number 3, 22 and 18. Second possibility can be 22, 20. Third possibility 22 दो बार आप सिलेक्ट कर रहे हो. Fourth possibility 22, 24. लास्ट रो पे क्या गौर करिए, यहां पे दिया है 2418, 2420, 2422 and we have 2424. Okay, so therefore if you see, ultimately we are getting 16 possible samples. 16 possible samples. Okay. Okay, sampling frame and sampling units, they are different. Okay, first you focus on what I'm, don't shoot questions randomly. First, see what I'm doing. Otherwise, after I cover this part, again, Reshma will ask, sir, go back to slide number so and so. First, you focus on this. Don't ask random questions only for the sake of asking questions. Mat kariye, please. First, you focus on what is being discussed. Okay. Now, if you see, this is a very important part. If you don't follow, I'm damn sure again after half an hour or 15 minutes, you will say, please go back. It will be a waste of time for everyone. Please understand, I'm not conducting a session only for one student. It is for everyone, right? So therefore, I cannot take too much of time only to explain the same concept to one student. Please note, we have a time-bound, agenda. Okay, this is not a 24/7 helpline. I hope you understand that. So now we have 16 sample means. Please see. यहाँ पे आप देख सकते हो 4x4 मैट्रिक्स है जहां पे 16 ऑब्जर्वेशन, 16 पेयर्स. ये सारे 16 पेयर्स का अगर मीन निकाला जाएगा, इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस. प्लीज सी वेरी केयरफुली, very carefully. So if you see, I'm going back. If you see, this is the mean. So for example, 18 and 18, the first mean is 18. 18 or 20, इसका mean 19 निकल रहा है. Please see. Just check row and column wise. So now what we have done, from the population, we have drawn a sample of 2, and all possible samples we find 16 samples. 16 samples can be drawn. For every sample, we are finding out the sample mean, yani average, simple average. Now what we are doing, ये जो हम लोग average निकाले हैं, now 16 averages have come. उसका average हम लोग लेंगे to get the sample mean. Population mean we have done. Population mean I think it came to 21. अभी sample जितना possible sample है, उसका mean हम लोग निकालेंगे और आप लोगे the sample standard deviation is 1.58. Whereas the population standard deviation was more than 2. So this is showing basically यहाँ पे what we see is that even though we have drawn samples of 2 from a population of 4, 16 possible samples can be drawn. 16 तरीके में हम लोग sample select कर सकते हैं. And now if you compare the population and the statistic, please note carefully. population का जो फीचर है उसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर, सैंपल का जो फीचर है उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक. पॉपुलेशन का आप अगर ध्यान देंगे, पॉपुलेशन पैरामीटर नंबर 1, पॉपुलेशन मीन shown by mu amount. What is the number you see? Mu is 21. यानी पैरामीटर नंबर 1 is 21. Parameter number 2, which is shown by population standard deviation, 2.236. Whereas in case of the statistic, sample mean is coming to 21, but the sample standard deviation is 1.58. So this is the basic understanding of population versus sample, parameter versus statistic. And now we come to the last part, that is standard error. That means we can see in the last example that population standard deviation is 2.236,
but the sample standard deviation is 1.58. That means the sample standard deviation is not equal to the population standard deviation. Or that is more natural because we have taken a sample of size 50%. Population is 4, but sample is 2. Naturally, standard deviation will not match. So now we come to a concept which is called standard error. Standard error का concept क्या है? Concept is we have to see sample mean जितना population mean का close होगा. That means the sample is really good. But if the sample mean and the population mean have a huge difference, then that means the sampling design is not correct. So the difference between sample mean, population mean, sample standard deviation, population standard deviation, this is referred to as the standard error. Error means mistake. Error means galti. Standard error. Standard error ka formula from the study material, if you see, now we will see the standard error formula. The standard error is equal to sigma by root n. Sigma by root n, where sigma is the population standard deviation and n, जो छोटा n है, it is the size of the sample. Very, very, very important question. इसका मतलब है standard error is inversely proportional to the size of the sample. Please see 13.2.8 का जो formula दिया हुआ है, 13.2.8 and 13.2.9. Please see, very, very important. Very, very important. Please. Okay, please see. This is 13.2.8 and 13.2.9, where we are checking that the standard error formula, this is from the study material, standard error is equal to sigma by root n. That means n jitna बढ़ेगा, n का value जितना बढ़ेगा, standard error उतना कम हो जाएगा. Please see the formula. That means standard error जितना कम हो जाएगा, उसका मतलब है population mean will come closer and closer to sample mean. Similarly, population will come closer to the sample standard deviation. Sample mean or population mean में जो अंतर है, we are calling it standard error, and it is denoted by sigma divided by root n, where n, small n, is the size of the sample. That means the standard error is inversely proportional to the sample size. This comes as a question. हम लोग बाद में देखेंगे. You will find this is a very frequently asked question. Very important. This is for SRSWR. SRSWR का मतलब क्या है? Simple random sampling with replacement. SRSWR. Simple random sampling with replacement. That means you are drawing from a box of 10 colored balls. You are choosing 3 balls. You are drawing a sample of 3 from a box of 10 balls. After choosing the first sample of 3 balls, you are again replacing the ball in the box. Again, you are mixing them. Again, you are drawing 3 balls. This is called simple random sampling with replacement, SRSWR. The other way is SRSWOR, simple random sampling without replacement. That means you are out of a box of 10 balls, colored balls, blue, red, green, yellow, you are choosing 3 balls. And you are keeping these 3 balls separately. That means अभी बक्से में कितने बॉल है? 20 minus 3 यानी 17 balls. 17 balls से आप फिर से 3 बॉल आप सिलेक्ट कर रहे हो. You are selecting another 3 balls. Second sample. Again, these 3 balls you are keeping in another basket without replacing it back to the box. This is SRSWOR, simple random sampling without replacement. The formula you have here, you have to memorize. The standard error for simple random sampling with replacement, SRSWR,
It is a simple formula, sigma by root n, root small n. But if it is simple random sampling without replacement, then we are getting the formula is sigma by root n multiplied by square root of n minus n divided by n minus 1. And this is called the finite population correction. So this is slide number 23 and very important formula from the study material, which is vital for the exam. So one of our students was asking that, is there any question on theory or will there be any question on the numerical? So this formula, in my understanding, is very important because a question could come based on this particular formula. SRSWR और SRSWOR दोनों का. So दोनों का जो है formula we must know, because a question could come where maybe the size of the population is given, the standard deviation is given. Now you may have to calculate standard error. So the standard error will be the sigma, that is population SD divided by the size of the sample, of course square root of the size of the sample. So this formula, please, you have to remember and memorize. So therefore, SRSWR, please see I've written in the box here that, please see. So here we have SRSWR. After any element randomly selected, if it is replaced and again you are selecting another sample, तो मैंने एक बॉक्स बक्सा से 20 वहां पे मान लीजिए, वहां पे 20 पेन, मेरे पास एक ये पेन है ब्लू कलर का, मान लीजिए डिफरेंट कलर का पेन है, मैं वहां से पेन उसमें 20 पेन है, 20 पेन्स, आई एम ड्रॉइंग अ सैंपल ऑफ 4 पेन्स, मैं रैंडमली 4 पेन उठाऊंगा. अब वो ब्लैक इंक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है. तो मैंने 4 पेन उठाया, सैंपल 1 बन गया, but I replaced all the 4 pens back to the box. Then again I draw another 4 pens. This is called random sampling with replacement. क्योंकि मैं पेन्स को उठा के सिलेक्ट करने के बाद वापस रिप्लेस करके दोबारा सैंपल ड्रॉ कर रहा हूं. But if it is simple random sampling without replacement, it means that after selecting these pens, I am simply keeping them in another site. That means out of 20 pens, I have got 4 pens in my hand जो मैं अलग रखूंगा, यानी अभी बक्से में 16 pens are there, क्योंकि 4 पेन मैंने हटा लिया. This is called SRSWOR, simple random sampling without replacement. So please go through this particular formula. Derivation of this formula is not in our syllabus, just go through this formula. So this is SRSWR. I've written on the right hand side of the slide. We are on slide 23. And you can see that SRSWOR is also included. ये जो chapter है इसमें गिने चुने questions are usually, they are more, I would say, probable for your exams, possible questions. So we will look at these questions, 15 to 20 questions we will do, and you will get a complete idea of the type of questions which are expected. Okay, now we will see some illustrations from the study material. First, आप देखिए 13.2.1. We are now going to illustrations part. So here you can see 13.2.1. Population is having 5 units A, B, C, D, E. You have to draw all possible samples of size 3 without replacement. So please see the formula, combination formula, permutation combination. Here the number of sample is 3. Population is 5. So in how many way? Total number of possible samples without replacement. SRSWOR 5C3. That means it is the formula of your combination, permutation combination. So here it's 5C3, you are getting 10. And the combinations are given. Very important formula. Again, it can come as a question on sampling chapter. The next example is pretty long example where we can see population में 3 member है, 1, 5 and 3. आपको possible sample of size 2 आपको draw करना पड़ेगा. So आप देख सकते हो, if you do it with sample, with the replacement and without replacement, you can see the table given and उसमें sample दिया हुआ है. Sample mean is also calculated. From there, you can find out the sampling distribution. क्योंकि आपको possible sample मिल जाएगा.
From every sample you can find out their mean. और आपको जब ये 10 या 9 सैंपल्स का मीन मिल जाएगा, you can find out the average of the mean. Also, you can find out the standard deviation, वगैरह वगैरह. And this is nothing but statistic. That means this is the parameter. This is the characteristics of the sample. Okay, so this is illustration number 2. Last part of our curriculum is the sampling techniques. कैसे sample selection करना है? Number, yes, 24. So sampling techniques. So here what we are doing, we are trying to see that how to draw the sample. Okay. Okay. One question, how to draw the population mean. I am giving one example. चलिए हम लोग साथ में करते हैं. Just it's not there in the study material. I'm just drawing an example. Say there are 5 students in a class. Okay, so we have A, B, C, D, and E. Quantitative aptitude, this is population, size is 5. Okay, now quantitative aptitude paper में इनका score इस प्रकार है. A has scored 70, B has got 80, C has got 90, D has got चलिए 85, and E has got 65. The scores are 70, 80, 90, 85, 65. The question is, one of our student is asking how to calculate population mean. चलिए इसका population mean क्या होगा? ये population है, 5 स्टूडेंट A, B, C, D, E, इनका स्कोर है 70, 80, 90, 85, 65. तो इसका population mean क्या होगा? Add all the 5 marks and divide by 5. तो हम लोग करके देखते हैं. So I'm using my calculator and just calculating the population mean. So this was one of the question from Rishma. Just check. 70. A has got 70. So I'm writing 70 plus 80 plus 90 plus 85 plus 65. Total comes to 390 divided by 5. So divide by 5. I am getting 78. 78 is the population mean in this case. इसका मतलब है population mean shown by mu is equal to 78. So I hope you have understood. Muskan is asking, can we consider statistic and statistics same? No, statistic is the technical term which is used to find out कि जो sample का जो characteristic है, sample mean, sample standard deviation, इसको हम लोग statistic कहेंगे. Statistics is the subject which you are studying. Okay, so they are not the same. Okay, parameter is based on population or size. Parameter is based on the population. Population का size is a parameter. Parameter अगर आप कहेंगे, Muskan is asking this question. Muskan, parameter broadly इस तरह से सोचिए 3 types. Parameter first of all means something related to the population. So population का संख्या कितना है? Size of the population is a parameter. First example, mean yani average of the population is another example of parameter. Number 3, standard deviation of the population is the third example of parameter. So parameter ka 3 example. First is population size, population mean, and number 3 is population standard deviation. Okay, so this was my answer to the question for Muskan. So which formula she is asking, which formulas should we use? Yeah, you will use a summation formula. So when we are trying to find out population mean, we will use summation. जैसा मैंने किया अभी कि 5 people are there, उनका number है 70, 80, 90, 85, 65. You have to find the population mean. So population mean comes to, there are 5 people. Summation करने से total amount, total marks comes to 390. 5 people, so divide by 5, you are getting some population mean, you are getting 78. Okay.
Now we will look at the last part, यानी sample करने का तरीका. There are two ways. First is statistical method, the other is non-statistical. So let us look at the first one from the study material. बहुत सारे terms are given. So probability sampling है. This is 13.2.6. So हम लोग अभी slide number 26 पे है. We are almost end of our discussion. So इस पे we can see there are three types of sampling. Sampling technique. So अब तक हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं right from the beginning, first we started by solving certain questions, queries. इसके बाद हम लोग जो चैप्टर में कवर किए हैं, what is sample, the need for sample, सैंपल सर्वे का जो चार बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. फर्स्ट इज द स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी जो हम लोग कहते हैं, उसका जो प्रिंसिपल. देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. After that, we discussed about what is population, what is sample, what is parameter, what is statistic. Okay. Then we discussed about how to find the population mean, and thereafter we went into detailed discussion of standard error, जो कि sigma by root n is the formula of standard error when there is a SRSWR, that is simple random sampling with replacement. Finally, we are looking at the techniques of sampling. Probability sampling मतलब ऐसा sampling जहां पे population का जो, when I'm drawing the sample, every unit of the population must have the same probability of getting selected. मतलब क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, मैं एक सैंपल बना रहा हूं 3 बच्चे का, सैंपल साइज इज 3, पॉपुलेशन इज 10. हर बच्चे का सैंपल में सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी अगर सेम है, देन वी विल कॉल इट प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. इट इज अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग. So first is simple random sampling. SRS, please see, it's called simple random sampling. Please read what is given. When the units are selected independently of each other in such a way that each unit belonging to the population has an equal chance of being part of the sample, then the sampling is known as simple random sampling, or you can call it random sampling. Matlab, random sampling is a part or a type of probability sampling. Please keep that in mind, because here every unit has equal probability of getting selected. So it is a statistically efficient way of sampling. Now we have the other type, SRS. Once again, I have shared in this slide, sample with replacement, sample without replacement. Sampling with replacement matlab, after any element is randomly selected, we are replacing it back and then randomly selecting another sample. Sampling without replacement is what? From the population we are selecting samples. We are not replacing the samples. उसको हम लोग replace नहीं करेंगे, उसको अलग से रखेंगे, फिर से sample draw करेंगे. So this is like a combination. Permutation combination का जो combination type का जो problem है, it is like that. So this is simple random sampling. रैंडम सैम्पलिंग का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है. एडवांटेज नंबर 1, इजी टू कंडक्ट, और आप सैम्पलिंग जो प्रोसेस है वो काफी इफेक्टिव होगा. डिसएडवांटेज इज दैट सारे मेंबर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, एंड डेफिनेटली टेक्निकली इट इज मोर डिफिकल्ट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कब यूज करेंगे? जब पूरी पॉपुलेशन को हम लोग स्ट्रेटा में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेटा का एग्जाम्पल देखिए. से आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एवरेज सैलरी ऑफ पीपल लिविंग इन अ हाउसिंग सोसाइटी. तो मैंने क्या किया, उसको सैंपल ड्रॉ करने के लिए मैंने स्ट्रेटा में डिवाइड कर लिया कि 50,000 पर मंथ टू 1 लाख रुपीज पर मंथ फर्स्ट स्ट्रेटा, 1 लाख रुपीज टू 2,50,000 रुपीज सेकेंड लेवल, 2,50,000 to 10 lakh rupees per month third level, more than 10 lakhs fourth level. तो मैंने क्या किया, पूरा जो पॉसिबल पॉपुलेशन मेरा है उसको मैंने स्ट्रेटा में डिवाइड कर लिया. मैंने 4 स्ट्रेटा बना लिया, 10,000 to 50,000, 50,000 to 2,50,000, 2,50,000 to 10 lakhs, 10 lakhs and above. अभी हर स्ट्रेटा में, हर
जो क्लस्टर है, हर क्लस्टर में वी विल सी हाउ मेनी पीपल फ्रॉम दैट हाउसिंग सोसाइटी आर देयर, और हर सेगमेंट से हम लोग सैंपल ड्रॉ करेंगे. इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपल. स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज नॉट यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज स्मॉल. अगर पॉपुलेशन छोटा है तब स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज नॉट यूज्ड. ऑल्सो अगर स्ट्रैटिफाइड सैंपल, अगर पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, तब स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज नॉट यूज्ड. अगर पॉपुलेशन इज मिक्स्ड, दैट मींस हेट्रोजीनियस, आपस में डिफरेंसेस है. मान लीजिए फूड प्रेफरेंस, इनकम लेवल. अभी हर काफी सारे स्टेट्स में इलेक्शन होगा, एग्जिट पोल, पॉलिटिकल व्यू अगर अलग अलग है, देन ओके वी कैन यूज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग. अगर पूरी इंडिया का एक सैंपल ड्रॉ करना है, वी विल डिवाइड इंडिया इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स. हर स्टेट से हम लोग सैंपल ड्रॉ करेंगे. So this is also a type of sampling where we are dividing the entire population into cluster. Kabhi kabhi we are dividing them into strata. Okay, that is different segments. Now we have multi-stage sampling, another technique. यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि this is carried out in stages. So पहले हम लोग first stage select करेंगे. मान लीजिए there is a mix of 100 students इन अ पर्टिकुलर. मान लीजिए ये लोग बैठे हैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए. एक इंटरव्यू होगा, वहां पे 100 लोग बैठे हैं. आई वांट टू फाइंड आउट इनमें से हाउ मेनी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. नाउ दीज 100 पीपल कैन हैव different qualifications. Some could be CA, some could be MBA, some could be CS, company secretary, some could be engineers, some could be lawyers, some could be economics experts, different background. So here, maybe I may have to use multi-stage sampling. I want to find out what is the approximate percentage of CAs in this population. So maybe I can use multi-stage sampling. So this is used in stages. Multi-stage means stage number 1, maybe we are using random sampling. Stage number 2, we are using maybe stratified sampling. So the whole purpose of multi-stage sampling is that first step is to select certain units. उसके बाद हम लोग बाकी यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे. I have given one example here. You can see practical example. Stratified random sampling. Population is divided into 2 or more groups called strata. It could be due to, it could be like on the basis of age, income, weight, height, location, marks which you have received. So these are the different strata. Another example I have given, मान लीजिए audit clients. I want to, maybe I have got 100 audit clients. I can divide them into different categories or strata. Multinational companies, listed public sector companies, unlisted public companies, private limited company. So 4 strata में पूरा population को मैंने divide कर दिया, और अभी हर segment में I will draw a sample. Maybe MNC में मेरा 20 client है, 20 clients. उनमें से I will draw a sample of 4. लिस्टेड पब्लिक सेक्टर मान लीजिए मेरा 5 क्लाइंट्स है, वहां से आई विल ड्रॉ सैंपल ऑफ 4. इस तरह से फ्रॉम एवरी सेगमेंट आई विल ड्रॉ सैंपल ऑफ 4. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, एंड हियर अगेन वी कैन यूज मल्टी-स्टेज अप्रोच. Lastly, we have systematic sampling, which says that the first in a population we are selecting the sample randomly. First we are selecting one particular unit. जैसा मैं बता रहा था पहले कि 50 लोग हैं in a class, roll number 1 to roll number 50. Now what I am doing, I am selecting 5 people randomly, but I will use here systematic sampling. So the first person I am taking up is, say, roll number 3, using random sampling. 3. After that, what I am doing, I am saying that after roll number 3, every 10th person will be in the sample. Or maybe say, let us take every 7th person. So I have taken roll number 3 first. Now after roll number 3, 7th person means roll number 10 will come. Roll number 10 के बाद another 7th person means roll number 17 will come. Roll number 17 के बाद the next 7th person means 17 plus 7, 24th person. 24 plus 7 gives me 31.
31 plus 7 gives me 38. 38 plus 7 gives me 45. So I am getting a sample out of 50 students, roll number 3, roll number 10, 17, 24, 31, 38, and 45. This is an example of systematic sampling. You can see the study material definition. It clearly says selecting every nth or kth subject from a list in the population. So मैंने population में roll number 1 to 50 students का roll number मेरे पास है. First person I am selecting randomly is roll number 3. After that, every seventh person I am selecting. So this is example of systematic sampling. Last we have is purposive sampling, yeah, judgmental sampling, where statistical probabilistic sampling is not used. Judgmental sampling means you are the person who is drawing the sample, जो खुद sampling कर रहे हैं, he is using his judgment, he is using his idea, his bias, his likes, his preference. So यहाँ पे it depends. You can see on the lower part of the slide, it is written from the study material that sampling is judgmental, yeah, purposive when it is based on the belief, prejudice, whims, and interest. So मान लीजिए you are trying to create a sample of 10 people जो कि मॉल से कोई मूवी आप जानना चाहते हो कि भाई कोई भी मूवी, लेटेस्ट कोई मूवी, ब्लॉकबस्टर मूवी, वो हिट हुआ कि नहीं, लोगों को पसंद हुआ कि नहीं. आप मॉल के बाहर खड़े हो जहां से मल्टीप्लेक्स से लोग निकल रहे हैं, एंड इंस्टेड ऑफ talking to every fifth person who comes out or every sixth person who comes out, what you are doing, आप देख रहे हो कि भाई ये जो लोग निकल रहे हैं, ऐसा कौन सा बंदा है जो अपना उम्र का है. So suddenly you find a young chap your age, maybe 16 to 18 years. आपको लग रहा है कि ये मेरी उम्र का है. You are going and asking कि भाई कैसा लगा मूवी. That means here you are not using any statistical tool. You are not using any statistical numbering. You your own judgment. आप अपना उम्र के हिसाब से आदमी को पकड़ रहे हो. Also, आपका जेंडर के हिसाब से. If you are a girl, maybe you are only talking to girls. वो भी उस लड़कियों से जो आपके उम्र का है और जो हॉल से, मूवी हॉल से निकल रहे हैं. This is not a statistical way of sampling. You are using judgment bias. It is called purposive sampling or judgmental sampling. Okay, so we are now going to some of the MCQs and then we will see the questions. We are on slide number 29, sorry. Question set A. Okay, so we are taking the first set of questions, set A. Question number, yeah, we have 10 questions here. Let us take, चलिए यहाँ पे very good example. 10 question है इस slide में. It is like the population. Okay, we will take a sample of 5. 10 से हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे. तो हम लोग कैसे सैंपल सिलेक्ट करेंगे? चलिए, एवरी सेकंड क्वेश्चन यानी इवन नंबर को हम लोग पकड़ेंगे. वी आर ड्राइंग अ सैंपल. क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए. द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी सेज व्हाट? Statistical regularity says that a large sample drawn at random from the population would possess the characteristics of the population on an average. So this is basically, अगर देखा जाए, this is basically option C, question number 2, option C. Acha, one question from Muskan. Some important probability sampling other than simple random sampling are stratified sampling, multi-stage sampling, multi-phase sampling, cluster, and so on. Acha. These types of sampling are also random sampling. These are also probability sampling. Okay, Muskan. This is, I think, come from question is from Muskan. Okay. Judgment sampling I have already explained. You have understood. जैसे मैंने बताया कि आप मॉल से, एक सिनेमा हॉल से, मूवी हॉल से लोग निकल रहे हैं. You want to know their feedback. तो आप क्या कर रहे हो? As a girl, you are choosing only girls of your age who are moving on. So you are using judgmental sampling. Okay, I hope you have understood. Yes. Now we are looking at yes 2C. Number 4. Question number 4. The population of rows in Salt Lake City
अब एक शहर में रोज जो एक फूल है, भाई ये तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन, सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन 4 इनफाइनाइट होगा। थर्ड सैंपल है, ओके, रैंडम सा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग जाएंगे अभी। रैंडम सैम्पलिंग मींस व्हाट? रैंडम सैम्पलिंग मींस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो क्वेश्चन नंबर 6, जो 6th क्वेश्चन है, इज इट नाउ, एक सेकेंड, नाउ रैंडम सैम्पलिंग मींस probability sampling with the same probability for each unit. Now near every, मैं बता रहा था, every unit has equal probability of getting set, the same probability for each unit. 6D appears to be the nearest answer. Our we are taking some. Fourth question is number 8. Question number 8. A statistic is what? Function of sample of population unit, characteristic of a population, part of a population. So we know statistic means something to do with the sample. So question number 8, option A is the right answer. A statistic is a function of sample observations. अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो हम लोग देख रहे थे कि सैंपल मीन, उसको जब हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इट बिकम्स अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? It is a distribution of what? Question number 10, if you see, it is a basically shows the probability distribution of a statistic. यानी सैंपल में जो हम लोग मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, उसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी, देन वी आर एक्चुअली गेटिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ सेट ए. सेट ए का कुछ और क्वेश्चंस में हम लोग जाएंगे. लेट अस गो टू द नेक्स्ट लॉट. क्वेश्चन है 12 से लेके 24 तक क्वेश्चन है. नाउ हियर इफ यू सी, हम लोग यहां पे सैंपल लेंगे 12 से 24, हम लोग यहां पे ऑड नंबर को उठाएंगे. सबसे पहले हम लोग 13 क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे. तो यहां पे भी हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं. आउट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 12 टू 24, वी आर सिलेक्टिंग क्वेश्चन नंबर 13, 15 लाइक दिस. So you can call it, it's like a systematic sampling. Okay, question number 13. As the sample size increases, standard error क्या होगा? Very important, we have discussed this in detail. As standard error का formula क्या है? Sigma by square root of n. यानी as the sample size increases, standard error will decrease. Now question number 13 पे देखिए, there are two options, decreases और एक ऑप्शन दिया हुआ है, that is decreases proportionately. Now if you see question number 13, the correct answer is it will decrease. Proportionately नहीं होगा because there is a different algorithm here, but it will decrease. Question number 14, very important. It is an even number, but still I am taking it. If from a population with 25 members, a random sample without replacement of 2 members is done. Answer is very simple. We have discussed, अगर without replacement है, then how many sample can you draw? Combination का formula use करना है, यानी यहाँ पे we will use the formula 20, population size is 25, sample size is 2. So number of samples will be 25C2. So if I do it, it will be factorial 25 divided by factorial 23 into factorial 2. That means 24 into 25 by 2, it comes to 300. क्वेश्चन नंबर 14 का मेरा आंसर आ रहा है 300. एक बार we will check the answer bank at the end given. Yeah, 14A is the right answer. Now we are going to 15th question. If odd number है, a population comprises 5 members. The number of all possible samples of size 2 which can be drawn with replacement. So please note, मैं पहले बता रहा था कि इस चैप्टर से theoretical questions का भी importance है. Numerical questions can also come, and I had also indicated 3 important formula. The first formula is regarding standard error, and the remaining 2 formula are with regard to the number of sample which you can draw.
Question number 15 देखिए, it is a SRS 15th question. Number of possible samples of size 2 that can be drawn from it with replacement. That means this is SRSWR, simple random sampling with replacement. इसका जो formula है, the formula basically is n to the power n, where नीचे का जो n है, base, n to the power n. N is means here the size of the population. Index में जो है, जो ऊपर बैठा है, that is basically the number of sample, possible sample. So here the answer will be 5. Population का size 5 है. So 5 to the power 2, यानी 5 square, यानी 25. So 15th question I will select option number D. Answer is 25. We are checking the answer given in the answer key. Yes, answer is 15D. Now we will go to 17th question. Simple random sampling is what? Now, simple random sampling is, we will say it is definitely probability sampling because we are using probability techniques. So 17th question. 19th question, which sampling provides separate estimates for population means for different segments and also an overall estimate? Now, sampling providing separate estimate for population means for different segment. Since segment is given, different segment, so you can easily understand it. They are talking about stratified sampling, different segment. जैसा मैं बता रहा था कि I can divide my entire client base into 4 category: audit client, consulting clients, tax का client, income tax का, GST. So 4 strata, so 4 segment. So question number 19, obviously the answer is the second option. Very good. Many of them are giving the right answers. Okay, now we move to number 21. Question number 21. Which sampling is affected most if the sampling frame contains an undetected periodicity? So question number 21, it will be the systematic sampling if there is an undetected periodicity. So मान लीजिए कि we have a period we are taking as number 9. So in a sample, in a population, we are randomly selecting the 5th number and then every 9th number. But अगर इस ये जो period है 9, if it is not properly detected, then this systematic sampling system or technique will become wrong. It will become biased. It will give erroneous output. So question number 21, option number D is the right answer. Now we are going to the last 2 questions. Of course, last 2 questions, if you see, question number 23 लेते हैं. If a random sample of size 2 with replacement is taken from a population of 1, 3 and 6. So 1, 3 और 6, यहाँ से अगर आप with replacement दोनों संख्या को सिलेक्ट करेंगे, आपका सैंपल क्या होगा? Either it can be 1, 1. आपका नंबर क्या है? 1, 3 and 6. So it can be 1, 1, it can be 1, 3, it can be 1, 6. Next, it can be 3, 1. Okay. Sorry, 1, 3 is done. It can be next, we can say it can be 1, 6. 1, 6 is one of the combination. It can be 6, 1. It can be, we have size 2 and the digits are 1, 3 and 6. Size 2. So we will see it can be 1, 3 and 6. So we will take definitely. It can be 6, 6 also because it is with replacement. Also, it can be 3, 3. So accordingly, if you see the digits will be, it can be 1, 1, it can be 3, 3, it can be 6, 6. Next, it can be 1, 3, 3, 1. Similarly, it can be 1, 6 and 6, 1. And it can be 3, 6 and 6, 3. So 23rd question, option number C is the right answer. Because these are the possible combination क्योंकि ये है with replacement. Similarly, 24th question is similar question and you can try it out. It is as similar to 23rd question. We now proceed to the very important part. After completing the questions, we go to MTP and RTP. First question, very, very important for upcoming exams. 20th question from this is from MTP. Okay. पहला जो क्वेश्चन है आरटीपी का है शायद. Yeah, first is RTP question number 20. RTP revisional test paper question.
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं? You know, qualitative characteristic is known as attribute. So question number 20, I am ticking A, option A. Many of you are giving the right answer. Thanks to each one of you. Now we go to MTP questions. 62nd question. Please see. Already we have discussed this several times in course of our session. The dash, the size of the sample, more reliable is the result. हम लोग डिस्कस कर रहे थे जितना sample का size बढ़ेगा, larger the sample, more will be the accuracy of the sample. That means you are more confident, you are more sure, and you are more reliable. You can rely on the sample. So 62 number जो question है 62, I am going to select question 62 option number. I will go for C, 62C. 63rd question. The standard deviation of the dash distribution is called standard error. Standard deviation of the basically sampling का जो distribution उसी को हम लोग standard error कहते हैं. So question number 63, I am going to select option number D, D for delta, that is sampling. So ये जो MTP RTP questions हम लोग देख रहे हैं, you can see these are the type of questions which are, again, you know, we are doing a sample of all possible questions. It itself is a sample, and you can see, but we are focusing on each and every question in the MTP and the RTP. We are doing full population there. यहाँ पे कोई हम लोग selective नहीं कर रहे, सारे question MTP RTP last 1 year का all questions we are doing. We move on now to the next slide. You can see this is from the examination. You can see the exam questions. ये एक जो हेडिंग आप देख रहे हो क्वेश्चन पेपर, एक्चुअल एग्जाम, आपका जो एग्जाम होगा उसका बुकलेट का आप एक यहाँ पे यू कैन सी सारे डायरेक्शंस दिया हुआ है. प्लीज डू नॉट ओपन द बुकलेट. ऑल दिस क्वेश्चंस आर गिवन. क्वेश्चन पेपर का टॉप मोस्ट पार्ट आप देखिए, एंड ये है 25-26 पिछले साल और इस साल का पास्ट ईयर क्वेश्चंस. We are first taking up set 1. मैंने 4. There is no random sampling here. All questions we are solving. Full population. First set 1. Question number 32 आप देख सकते हो. This is from previous year's question. Which of the following sampling method is completely free from bias? गौर करिए question number 32. So you can see this question. Please see. Which of the following sampling method is free from bias? If you see, the nearest answer is random sampling. Random sampling is actually free from bias. The nearest answer, most appropriate answer. Question number 33. This type of sampling method depends entirely on judgment. We have done this many times. I was talking about the example. Movie देख के लोग निकल रहे हैं. आप कोई भी 5 आदमी से बात करना चाहते हो, but you are using your judgment, your bias, what your mind says, और आप क्या कर रहे हो, अपने जेंडर के, अपने उम्र के लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो. That means you are using bias, you are using a purpose. So question number 33, the right answer is option number C. Very well done. Many people are giving the right answer. Next question, if you see, number 72. According to the dash, we discussed this in the beginning, 4 important principles. According to the dash, if a sample of fairly large size is drawn from a population, then on an average, the sample will possess the characteristics of the population. ये एकदम first principle which we discussed, the principle of statistical regularity. Okay, we discussed all 4: inertia, optimization, validity. But this is basically statistical regularity. Please see, it is a past year exam question. Matlab, all the 4 principles are equally important. You may expect or you can get a question like this. Question number 74. In stratified sampling, when the strata variances differ significantly among themselves, we take recourse to Neimann's allocation. This is given in the study material. Basically, Neimann's allocation means the sample size will be proportional to the sample standard deviation. It is there in the study material. So this question is directly taken from the study material. It is an exam question. We move now to the next slide, and we are checking question set B of the
past year exam. We are now going to set 2. You can see ये है 2025 का exam questions, actual exam questions on this particular chapter of statistics. First question ये रहा आपके सामने, question 61. Please see if you can attempt it. Sampling method which belongs to the category of mixed sampling. Mixed sampling means we are using 2 levels of sampling. Maybe the first type is random sampling, the second type is purposive, mixed, hybrid. So yahan pe, if you see, one of the example could be it could be systematic sampling also, right? It could be systematic sampling, it could be multi-stage. Both, in my understanding, can be possible answers. Both are probable answers. There are some reasons in favor of systematic sampling also, because it can be seen as a mixed sampling. Systematic sampling क्या है? For example, randomly I am selecting number 7. मान लीजिए 7. Class में 50 लोग हैं. I am taking number 7. Then I am using a random number table and I am arriving at another number 4. And I am saying every 4th student after roll 7 will be included in the sample. That means first student जो sample में है roll number 7. उसके बाद 7 plus 4 11. उसके बाद 11 plus 4 15 roll number 15. उसके बाद 15 plus 4 roll number 19. उसके बाद 19 plus 4 roll number 23 and so on. This is the process. So this is an example of systematic sampling, but it can be a mix of 2 sampling methods. So 61 for the time being, I am putting 61A. 62nd question, please see if you can target this question and deal with this question. Question ये है, number of students in a college is an example of what? Definitely students का संख्या college में ये एक variable है, attribute तो नहीं है, it's a variable. अब ये क्या discrete है या continuous है? Of course, students in a college. Can the students be fractional? No. Can the students be negative? No. So the number of students in a college can occupy only whole number, वो भी positive integer. It cannot occupy a fraction. It cannot be an imaginary number. You know, real numbers and imaginary numbers. It has to be a positive integer. So I will select discrete variable, question number 62. So मैं 62 अभी आंसर बाद में देखेंगे. पहले हम लोग लॉजिक अप्लाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे और सही रीजनिंग अप्लाई करेंगे. So यहाँ पे 62nd question, I will click 62B. आगे बढ़ेंगे and we are checking and analyzing every question. मतलब यहाँ पे no sampling, full population. Question number 66, beautiful question which has come in the exam. Please see, after a singing competition on a live TV show, the winner is selected according to the number of likes each candidate has received on a messaging app. ये जो डेटा कलेक्शन मेथड है, ये किस तरह का डेटा कलेक्शन? ये क्या रैंडम मेथड है, क्या प्रोबेबिलिस्टिक है, क्या पर्पसिव है, क्या मल्टी स्टेज है? Beautiful, intelligent question. So if you apply the principles which we have discussed in detail today in course of our discussion, you will see यहाँ पे winner is selected on the basis of what? Likes. मतलब हर participant का जीतने का या सिलेक्ट होने का इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है. मतलब this is not a random sampling. This is based on what? Likes. Like हम लोग किसको देंगे? जिसको हम लोग जजमेंट अप्लाई करके जिसको पसंद करते हैं. That means जहां पे हम लोग we are not using statistical randomness, but we are using our mind, our purpose, our judgment, our bias. So question number 66, as per what I understand from the question, I am going to click option C. 66 I am writing C. तो 61 मैंने शायद A सिलेक्ट किया था, 62 का मैंने B सिलेक्ट किया, 66 का C सिलेक्ट कर रहा हूं. लेट अस सी क्या मैंने गलत जवाब दिया, सही जवाब दिया. We will now check the answers. Question number 61,
as I was mentioning, the answer key states that both multi-stage sampling and systematic sampling may be the right answer. I have selected systematic sampling. 62 ka we have selected option B, which is the right answer. 66 ka we have selected option C, yani purposive, which is also. So I hope you can see the actual questions which has come, and you can understand how we are using the logic. We now move to the set 3. Okay, you can see each and every exam question we are analyzing now. At the end, set 3 exam questions देख लेते हैं ये 2025. Question number 65. Please see. Which of the following is not a basic principle of sample survey? Dear students, we have discussed these 4 principles in the beginning. I have requested you to consider and study. Of course, you must have understood when I was explaining these 4 principles, but study them, क्योंकि आप देख सकते हो हर एग्जाम में ये 4 प्रिंसिपल से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है. Here the question says which is not a basic principle. अगर आप गौर से देखेंगे 4 प्रिंसिपल था. प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी था, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया था, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन था, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी. 4 प्रिंसिपल्स वर देयर. लेकिन यहां पे एक ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर्स. This is not a basic principle of sample survey. So this is the odd man out. Therefore, question number 65, 65 number question, I am writing down the answer as per what my understanding is. Option C, principle of large numbers, is the odd man out. The next question, exam question, which has come in the last exam, last few years exam, last few terms, 68th question from the question paper. An investigator collects information on salaries received by 1000 persons. ओके, 1000 लोगों का सैलरी, किसको कितना सैलरी मिला उसका एक डेटाबेस है. चलो ठीक है. फ्रॉम दिस कलेक्शन द डेटा ऑन women are extracted. So women employees, how much salary they have got, the database of the ladies is now extracted. Kindly see the exam question. See the word use, extracted. मतलब पूरा जो सर्वे हुआ, जो डेटाबेस, वहां से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया. क्वेश्चन इज नाउ दिस डेटा, ये जो लेडीज का सैलरी का डेटा है, इसको आप क्या कहोगे? विल इट बी अ प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सेंसस डेटा, ऑर्डिनल डेटा? फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट क्लास आल्सो. इफ यू सी, वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. यहां पे जो 1000 पर्सन्स का डेटा है, which includes male, female, that is primary data. But from the primary data, lady employees, women employees का जो salary का data है, this is now extracted. So this women salaries, women's salary जो earnings है, उसका जो data है, it is extracted from the primary data. So it is a secondary data. As per our understanding, I am ticking 68 option number B. I will put it as 68B. Very good. Okay. Muskan, you are asking statistical regularity in Hindi. आप थोड़ा समझने का कोशिश करो. स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पूरा पॉपुलेशन जो है, उसका जो खासियत, उसका जो फीचर है, वो सैंपल में भी रहेगा. सिंपल एग्जांपल, आप सोचो, किसी को आप खाली सोचो जब कोविड हुआ था, ठीक है, सिंपल एग्जांपल, पूरा जनसंख्या, पूरा शहर में, गांव में, हर जगह में सबको कोविड हुआ था, मैक्सिमम पीपल, किसी का हल्का, किसी का ज्यादा हुआ था. तो अब मान लो एक शहर में, आप जो शहर में रहते हो, पूरा शहर में मे बी 80%, 70% पीपल हैड कोविड. अगर आप अपना मोहल्ला में, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी, योर सोसाइटी इज अ सैंपल ऑफ द एंटायर सिटी. सो अगर सिटी में कोविड का एक हवा चल रहा है, देन आपका जो सैंपल, यानी आपका जो मकान है या आपका जो सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, उसमें भी जाहिर सी बात है, उसमें भी मैक्सिमम लोगों का कोविड हुआ होगा. दिस कॉमन फीचर जो पॉपुलेशन में भी है और सैंपल में भी है, इसी को कहते हैं स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी.
So I hope you have understood. Very good. Thank you, Muskan. 68th question we have noted down. Now we are going to the next question. ये देखिए 69th question, set 3. Two salesperson are presenting their numbers. क्या नंबर दे रहे हैं वो? पर वीक उन्होंने कितना सेल किया है फॉर मार्च. चलिए मार्च महीने का, ईयर एंडिंग है, चलिए, यानी 4 वीक है. वीकली सेल मान लीजिए 2 सेल्समैन ए एंड बी, किसका कितना परफॉर्मेंस है, इसको किस तरह से दिखाए. वंडरफुल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम, सी एग्जाम, एप्लीकेशन बेस्ड. ये डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन नहीं है. कौन सी एप्रोप्रिएट डायग्राम आप यूज करोगे एज अ एनालिस्ट? प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 69. इट इज फॉर द सेम मंथ. ऐसा नहीं है कि मंथ वाइज नहीं बोल रहे, सेम मंथ वीक वाइज आप दिखा रहे हो फॉर 2 पीपल. सो इसमें नो क्वेश्चन ऑफ ओगाई, ओगाई शोज यू क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन. ऑप्शन सी हम लोग हटा देंगे, ऑप्शन बी भी हटा देंगे, बिकॉज यहां पे वर्चुअली आपको वीक वाइज डेटा दिखाना है फॉर 2 पीपल. पाई चार्ट इज नॉट द appropriate diagram. हिस्टोग्राम यूजुअली वी नो हिस्टोग्राम इज फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे ओवरलैपिंग क्लासेस है. यहां पे कोई ओवरलैपिंग क्लासेस नहीं है, हिस्टोग्राम नॉट going to be appropriate. So adjacent bar chart will be the nearest in my understanding, which may be the correct answer for 69. So I am just explained कि logic क्या है, why we are selecting option number D. तो मैं 65 क्वेश्चन नंबर के लिए मैंने नोट किया था 65C. 68 क्वेश्चन जो था उसका मैंने B सिलेक्ट किया, 69 का मैं सिलेक्ट करूंगा D. इसके बाद हम लोग जाएंगे टू द आंसर्स. जो 65 आंसर इज सी, 68 का बी है, 69 इज डी. आखिरी स्लाइड आज के लिए, एग्जाम क्वेश्चन सेट 5. ये जनवरी 2025 का, हम लोग जनवरी 26, September 25, May, and we are now going to last exam January 25. First question number 61. ये रहा आपके सामने. Standard error and square root of sample size are what? Same question, different forms. The standard error formula is sigma divided by square root of n, where n is the sample size. Question is, standard error and square root are what? So if you see, the standard error is basically inversely proportional to the square root of the sample size, because standard error is sigma by divided by square root of n. Yani as standard error increases, sample size decreases, and as the sample size increases, standard error reduces. Yani degree of accuracy increases. That means reliability factor bhi बढ़ जाएगा. So question 61, I will click C. आगे बढ़ेंगे. 64th क्वेश्चन पे गौर करिए. इन टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टब क्या है? Friends, dear students, in the discussion we had on the statistical techniques last class today, you can see table. Table has 5 parts. अब टेबल का ऊपर का जो हिस्सा, you know, we have the caption, we have the box head. Total upper part is the box head. बाएं का तरफ जो इंपॉर्टेंट जो रो है, उस रो को डिस्क्राइब करने के लिए जो पोर्शन है उसे हम लोग स्टब कहते हैं. सो क्वेश्चन 64, इफ यू सी, आई थिंक द नियरेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, which provide description of the rows. So 64th question, I am clicking option A. The next question we are taking 65th question, which sampling technique is most appropriate when a person wants to ensure that subgroups are proportionately represented? Subgroups. Subgroups means simple random sampling is not one of the right answer. Now subgroups could be either, it could be a definitely stratified sampling you can consider for question number 65.
Next, we are checking number 67. Okay. Non-probability sampling is also known as what? Now, 67th question, non-probability sampling. Stratified sampling is a probability sampling. Simple random sampling is a type of probability sampling. Cluster sampling is also probability sampling. Which is the only example जो कि based on judgment, on purpose, on bias, that technique is non-probability. मतलब ये probability basis पे नहीं है. यहाँ पे एक ही आंसर है ऑप्शन सी, purposive or judgmental sampling, which is not a type of probability sampling. 67th question, we are clicking option C. We move to the last question, 68th question. Ogive is used to find what? Ogive is used to find what? Ogive and histogram, we may remember we were discussing this. Now, ogive is used to find, it is basically a plotting of the cumulative frequency. So, less than and more than जब intersect करता है, you basically get the median. So, question 68 will go on. The question 68, option number B. We are going for option number B. So accordingly, we are taking, just to say here, we are taking option number B. So 68B. Accordingly, we can get the answer. So it is the median. 67th question, we can see it is the purposive sampling. Also, we have done 65, which is the stratified sampling. Okay, so all the questions are done. Now we have covered more than 15 questions in the exam, MTP, RTP, plus almost 55 to 60% of the questions which are in the end of the exam, chapter end questions. We now summarize and close the entire discussion for this chapter. So what we have discussed, we started by discussing what is sample, the type of, the need for creating sample, the intention of creating sample, and the feature of a sample. Thereafter, we went into the details of what is population and sample, the differences. Then we talked about what is called parameter versus statistic. Thereafter, we have delved into the discussion of how to, what is sampling distribution. एक population से कैसे हम लोग sample निकालेंगे, उसका sampling mean कैसे निकालेंगे, we analyzed through a real life example, a detailed case study. And then we have also looked into the concept of sampling error. And we have seen that जितना sampling error घट जाएगा, जितना कम होगा, उतना sample accurate है, उतना reliable बनता है. So we have looked into the two important formula for sampling error, sigma by square root of n. This is for sampling, simple random sampling with replacement, SRSWR. Then we have looked at the types of sampling, probability sampling versus non-probability sampling. Within probability sampling, we have simple random sampling, you have stratified sampling, you have multi-stage sampling. In the non-probability type, we generally refer to purposive or judgmental sampling. And at the end, we have covered the exercise questions, mock test paper questions, revisional test paper, and all questions which have come in the last 1 year's exam. That means multiple terms of the CA Foundation exam, and more than 15 questions we have done in course of the 4 sets. So with this, we are concluding this discussion on the sampling. Please go through the video once again and make sure that you practice all the questions. And I hope with sustained practice and important points, जैसे 4 principles which we discussed, statistical regularity, inertia, optimization and validity, उसको review करिएगा. Parameter versus statistic review करिए. Standard error, very important formula. इसके बाद please review and go through the types of sampling techniques. That means sampling is of 2 types as we discussed. It is either the probability type of sampling or it can be non-probability based. And last but not the least, understand the difference between SRS and SRS, that is SRSWR, simple random sampling with replacement, and simple random sampling without replacement. Finally, go through the video where I have analyzed and solved all the questions
most of the questions, of course, of term and the chapter end questions, and MTP, RTP plus more than 15 questions from the previous year's exams. So with this, I'm closing the discussion. Thanks a lot and wish you all the best for your future exams. Probably I might have one session with you again at the end. Probably, I'm not very sure. I will just check the schedule. But till the time, keep practicing everything and listen to all the videos, go through the videos, always keep pen and paper handy, try to solve the questions under exam conditions and make sure accuracy बढ़ाने पढ़ते पढ़ते का जो diagram होगा, please start immediately drawing wherever possible in the rough work, especially for questions on logical reasoning and also for questions on statistics, plus for differential calculus and integral calculus. सारे फॉर्मूला उसको दोबारा रिव्यू करें, स्पेशली इंटीग्रल कैलकुलस का जो बेसिक फॉर्मूला, द बेसिक एप्लीकेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसको याद रखिए. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को फिर से रिव्यू करें, because those are, frankly speaking, some of the more difficult parts. See, every chapter in QA is not very easy. I fully appreciate that. हर दिन का डिस्कशन एक समान नहीं होता. Some chapters are tougher. For example, today's topic is technically very advanced. ये आसान चैप्टर नहीं है. Logical reasoning is the easiest, but differential calculus, integral calculus, statistical concept, these are the toughest. So if the chapter is tough, review it once again, practice more. Slowly you will gain the confidence and you will get more accuracy. So practice is the only key to perfection. Okay, all the best. We will meet again very soon. Until then, keep practicing. Thank you. I hand it over to our IT team for closing the session for today. Thanks a lot. Yes, sir. Over. Thank you.